Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our mains answer writing practice. Sorry, the next question of our agriculture optional answer writing practice. So that is write short notes on rainwater harvesting and watershed management. This was also asked in previous years. I think several times ये पिछले previous years में आ चुका है. And I have discussed these things in detail in my agriculture optional course. You can go to the playlist of this YouTube page where you will find agriculture optional paper 1 and agriculture optional paper 2. So I've discussed the whole agriculture important topics in these two playlists. So आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं. And you, if you have seen it from there, I think you will be able to answer this question very easily because I discussed these two things in detail in there. So शुरू करते हैं आंसर. Let's start. First of all, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वी विल लुक इनटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आप कैसे वी विल सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चन को. और अगर आप इसे खुद से अगर आप जान रहे हैं तो आप इसे पहले खुद से लिखें, राइट इट बाय योरसेल्फ एंड देन यू कैन सेल्फ इवेलुएट यूजिंग दिस वीडियो. You can look at your approach and how we approach in this video, and you can do the self evaluation of your answers. I always say the more you write, the more you understand, the more you get better. So let's start. What is rainwater harvesting? So rainwater harvesting is collection and storage of rainwater that runs off. जो बारिश की पानी है जो अगर कलेक्ट और स्टोर नहीं होती तो सिंपली रन ऑफ हो जाती. The collection and storage of this run off rainwater is known as rainwater harvesting. Or from where we can collect and store it? We can collect it from rooftops. जो छत हैं रूफटॉप से इसे कलेक्ट कर सकते हैं. वी कैन कलेक्ट इट फ्रॉम पार्क्स, रोड्स, ओपन ग्राउंड्स, etc. So we can collect this water from anywhere, from where there is runoff of rainwater. जहाँ पर भी बारिश का पानी बह रहा है वहां से अगर हम उस पानी को कलेक्ट कर लेते हैं और इसे स्टोर कर लेते हैं, दैट इज व्हाट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज. सो आई होप आपको समझ में आएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बेनिफिट्स क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स सेव वाटर दैट वुड अदरवाइज बी वेस्टेड. द रेन वाटर जो कि वेस्ट हो जाती है अगर हम उसे कलेक्ट नहीं करते हैं बातें, तो we are able to save that water here which would be wasted, which would be run off and wasted. So it helps to save that water. Secondly, it provides water supply other than monsoon. The water that we saved can be used in dry seasons. The saved water can be used in dry seasons other than monsoon. जो गर्मियाँ आएंगी, जब पानी की थोड़ी कमी होगी, तो ये जो स्टोर्ड वाटर है हम कभी उसे यूज कर सकते हैं. इट इज वेरी हेल्पफुल इन ड्राउट कंडीशन. व्हेनेवर देयर इज ड्राउट, वी ऑल नो ड्राउट, कभी भी सुखाड़ आता है तो फिर ये सेव्ड वाटर को भी हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं. दिस सेव्ड वाटर कैन बी यूज्ड देयर इन ड्राउट, इन ड्रिंकिंग पर्पसेस, in irrigation purposes. So this saved water can be used there. It improves the quantity and both quality of ground water. Quality and quantity तो हम सब जानते हैं ऐड होगा. और रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. वी ऑल शुड नो दैट रेन वाटर इज द वन ऑफ purest form of water, and when it is stored, so the quality of it is also good and the quantity तो increase होगी क्योंकि हम वहाँ पे रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं. It is a step towards sustainable water supply. Sustainability इससे बढ़ेगी. We will increase the sustainable water supply. There will be water supply even in drought conditions, even in dry seasons. Helps meet ever increasing demand of water. We all know that our population is increasing.
population is increasing, agriculture is increasing, agriculture is becoming intensive in many areas, so it all requires high irrigation. Intensive agriculture requires high irrigation, and high population requires high drink water for drinking. So we, with rainwater harvesting, we can meet this increasing demand, ever increasing demand. It is not going to decrease anytime, it is going to increase and increase, and this ever increasing demand can be met if we do rainwater harvesting. It reduces flooding. So see what happens if we leave this runoff water. अगर ये runoff water को छोड़ दिया जाए तो it gets converted into, when there, suppose one runoff is coming from this point, one runoff is coming from this point, one runoff is coming from this point, all this runoff is going to river, the water of river is increasing, so and that is leading to floodings, that is leading to floods. So when we harvest this water, we store this water underground, so this water will never be going to water bodies and increasing their water, so there are really chances that it will reduce flood. It alleviates pressure on reticulated water supply, the water supply which has high pressure. So doing rainwater harvesting, the pressure on those water supply, those water resources will be reduced, this pressure will be reduced. It reduces the capacity constraints in storm water systems. The capacity of, suppose this, as I've seen here, that if the water is harvested, the capacity of this resource will be not over its the water will be not over its capacity, so the capacity constraints in storm water system will be reduces, as excess water will be stored in groundwater, so it will capable to, its capacity will never exceed. Suitable for irrigation, this water which we have harvested can easily be used for irrigation, as we have discussed here. So these are some of the benefits of rainwater harvesting. ये सब rainwater harvesting के कुछ benefits हैं. I hope आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी. I hope you all understand this. There could be other benefits also. So आप comment करके बताएं. Please do comment other benefits which can be other benefits other than these benefits. So क्योंकि कमेंट करने से एक तो हमारे बीच बॉन्ड, एक तो हमारे बीच इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि कमेंट करने से आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी. यू विल बी इजीली एबल टू गेट पॉइंट्स इन योर हैंड, in your head. So this was about rainwater harvesting. Now moving to the second part of this question, that is watershed management. So what is watershed management? तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा, we need to understand what watershed is. So watershed is an area of land that drains or sheds water into a specific water into one point. So you must understand here. Suppose there are several points from which water is coming, and it drains itself into one point. It sheds water into a specific water body. Then this system is called watershed. Sheds, that is drains. Here all the points are coming and setting the water into one body. That is what watershed is. I hope you all understand this thing. Now types of watershed. First one is macro. Macro means big, and this micro means mi means macro means small. I hope you all should know it. So what is macro watershed? Macro ma. If the catchment is more than 5,000 hectares. What is a catchment? This whole area is catchment, where the water from these sources can be used. Where the water from these sources are coming is catchment. जो जहाँ से ये पानी आ रही है, जहाँ पे ये पानी को यूज किया जा सकता है, जहाँ पे ये पानी का इन्फ्लुएंस है, द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर इन सर्टेन एरिया इज इट्स कैचमेंट. तो इतना दूर इनकी, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे वाटरशेड है, तो ये इसकी कैचमेंट है क्योंकि इसी पॉइंट से वाटर आ रहा है. तो अगर कैचमेंट 50,000 हेक्टेयर से बड़ा हो तो इट इज मैक्रो वाटरशेड. If the catchment is between 10,000 to 50,000 hectare, then it is sub watershed. When the catchment is from 1 to 10,000 hectare, then it is milli watershed. When the catchment is from 1 to 1,000 hectare, 100 to 1,000 hectare, then it is micro watershed. And when the catchment is 1 to 100 hectare, then it is mini watershed. So these are the types of watersheds. Now what is watershed management?
Managing of this watershed, the managing practices which we need to manage this watershed is what watershed management is. Watershed management is the process of implementing land use practices and water management practices to protect and improve the quality of water and other natural resources in a watershed. So land use and water use practices in this watershed is what watershed management is, management of these all practices. So I hope you understand what watershed is, watershed management is. Now what are the objectives of watershed management? First of all, to control pollution, pollution control. What happens? If there are many areas from where in a catchment, in from where काफी सारे जैसे रिवर मान के चलिए रिवर polluted है, तो it will make the whole outlet polluted. So अगर if we can control the pollution in this river, the whole outlet will be controlled from pollution, whole outlet will be safe from pollution. So it helps in pollution control. अगर कोई एक यहाँ पे 6 नदी आ रही है किसी की जगह, एक नदी में भी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस से पोल्यूटेड है, तो उसको हमें मैनेज करके ठीक करना है ताकि पूरा जो उनका आउटलेट है, जो पूरा कॉमन सोर्स है, जहाँ स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ वाटर जमा हो रही है, वो पोल्यूट ना हो. मिनिमाइजिंग ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस बोथ लैंड and water is then, because in you are studying whole catchment, we are not using these water sources. जो catchment है जो इन water sources का, that is what we are also studying in this watershed. watershed management में resources तो यूज हो मैनेज हो ही रहे हैं, पर जो इनका catchment है, जो land है, वो भी मैनेज हो रहा है. So over exploitation ना होना है land का ना water का, उसे मिनिमाइज करना है. It helps in water storage, flood control, checking sedimentation. क्या होता है कि रिवर्स में कभी कभी सेडिमेंट्स सेडिमेंटेशन हो जाता है वाटर में. सपोज दिस इज रिवर इज एंड विथ कमिंग सेडिमेंट्स, इतने दूर पे सेडिमेंट्स होगा, इतना आधे हाफ रिवर इज फिल्ड विथ सेडिमेंट्स, देन विल बी मोर चांसेस ऑफ फ्लड्स. लेकिन हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन को भी चेक कर सकते हैं, तो उससे फ्लड कंट्रोल भी होगा. वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन इन दिस कैचमेंट, जो भी वाइल्ड लाइफ है उन्हें प्रिजर्व करना है. We need to look for the wildlife gets it drinking water. Wildlife has healthy vegetation in this catchment, तो wildlife preservation पे ये काम करते हैं. Erosion control and prevention of soil erosion control करना है हमें. क्या होता है when there is high runoff, so it erodes the soil. कैचमेंट में अगर अधिक है पानी है कुछ भी है, तो जैसे आप रिवर्स में देखते हैं उनकी साइड से ये दोनों एरिया इरोड होते रहते हैं, दोनों मार्जिन से रिवर पे इरोड होते, तो उस पर हमें कंट्रोल करना है ताकि इरोजन ना हो, और सॉइल के डिग्रेडेशन को, इरोजन को प्रिवेंट भी करना है. हाउ कैन यू प्रिवेंट? हम इन एरियाज में ट्रीज लगा देंगे, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग जो भी है उससे कंट्रोल कर देंगे. सो इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग इरोजन, controlling overgrazing in the sides of rivers by planting trees, recharging groundwater to provide regular water supply. Catchments हैं, water resources है, तो हमें ध्यान देना है कि proper ground water recharge भी हो, so that we get regular water supply. So these are some of the objectives of watershed management. I hope you all understand. और भी कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स आपको लग रहा है इसमें होने चाहिए, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब. It takes a lot of hard work to make a video like this for you, and if you like, share and subscribe and comment your points, then it motivates us to make more such videos for you. That's all for today. Have a nice day. Thank you.